ये थे तो बहुत अच्छी तरह से लोगों ने कहा था कि बोर ने क्वांटम कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, क्वांटम कॉन्सेप्ट यूज़ किया टू डिस्क्राइब एटॉमिक नंबर। क्योंकि उनका कहना था कि जो क्लासिकल थ्योरी है, लॉज ऑफ क्लासिकल थ्योरी जो हम बिगर बॉडीज के लिए यूज करते हैं, कैन नॉट बी यूज्ड एज सच टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइट पार्टिकल। ये कहा था किसने? बोर ने कहा था, तो मैंने इसमें लिखा है, आपके पास भी अवेलेबल है। मेन वो इंट्रोड्यूस्ड क्वांटम कॉन्सेप्ट to explain the stability of atom. He made bold assumption that classical laws of physics, which are used to describe motion of bigger bodies, cannot be used as such to describe motion of electron-like particle. And electron-like particle के लिए हम classical laws को use नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने क्या किया कि जो अर्ली क्वांटम थ्योरी है और ओल्ड क्लासिकल फिजिक्स से दोनों को कंबाइन कर दिया। He combined both classical theory and early quantum theory in the form of three assumptions. In the form of three assumptions. तो ध्यान ही रखना है कि इनका एक ही जो कहा था, he made one assumption that classical laws which are used in physics to describe motion of bigger bodies cannot be used as such to describe the motion of electron-like particle. He combined both classical theory and quantum theory to explain stability of atom in the form of three assumptions. जिसका इनका फर्स्ट assumption है Bohr's first assumption। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, जिसका नाम बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स है, इन्हीं के नाम पर है, विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। इनका केवल एक ही जो है विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। ये नहीं कह पाए थे कौन? चूंकि वहां पर क्लासिकल थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी के आधार पर हम कहते हैं कि जो भी एक्सेलरेटेड मोशन है वो एनर्जी को क्या करता है? रेडिएट करता है। तो ये है विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। इसके बाद इन्होंने कहा कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियस provides necessary centripetal force to the electron for circular motion। एक्चुअली ये क्लासिकल थ्योरी है, जो कि क्लासिकल थ्योरी में हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन
यानी कोई भी सर्कुलर मोशन है तो उसमें कहीं ना कहीं से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलना चाहिए। तो यही इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियस प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू द इलेक्ट्रॉन फॉर सर्कुलर मोशन। इन इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल है न्यूक्लियस का, यही पुल उसको प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। ये इनका फर्स्ट एजम्पशन है। इसका ओके, इसका मतलब है कि अगर हम ऑर्बिट कह लेते हैं कि सपोज कीजिए कि ये ऑर्बिट है, ये मतलब, या हम इसको जेडी न्यूक्लियस कह लेते हैं, एंड दिस इज circular orbit. This is circular orbit. Here velocity of the electron is Vn. Say this is nth orbit. Say this is nth orbit. This is nth orbit. This is nth orbit. और इसकी रेडियस को हम लोग मान सकते हैं कितना, Rn मान सकते हैं। तो इस पर पुल हो जाएगा कितना, न्यूक्लियस की इस तरह से होगा, जिसको हम Fn कह सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल, ये F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई L लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ZE इलेक्ट्रॉन चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज, इनटू E इलेक्ट्रॉन चार्ज बाई N स्क्वायर by n Rn square radially towards nucleus. This is electrostatic pull, जिससे एक इलेक्ट्रॉन को खींचे हुए कौन, न्यूक्लियस। कहीं ना कहीं से आना चाहिए। आपने कहा था कि ग्रेविटेशन में जितने भी सैटेलाइट्स हैं उनको ग्रेविटेशन पुल provides necessary centripetal force to the satellites for orbital motion for along about Earth. Tension in the string provides necessary centripetal force to the particle for circular motion T equal to mv square by R. It means for circular motion force is must. तो यहाँ जो आपको फोर्स मिल रहा है किससे मिल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल से मिल रहा है। अब this force provides necessary centripetal force to the electron. That is mvn square by Rn is equal to 1/4 pi epsilon naught into Ze square by Rn square, where Rn is radius of nth orbit. Very simple. This is very simple. You can understand easily. This is classical physics. Here, this is classical physics. This is first assumption. Okay. Repeat. Electron revolves. Electron moves around the nucleus on circular paths called Bohr's stationary orbits. Electrostatic pull of the nucleus provides necessary centripetal force to the electron for circular motion. Here this is electrostatic pull
nucleus on electron, and this force is equal to this. By Coulomb's law, 1 by 4 by epsilon naught into Q1 Q2 by R square. Here Q1 is ZE. This is charge of nucleus, and E is charge of electron by Rn square. Here this is Coulomb's law, inverse square law. And this electrostatic pull provides necessary centripetal force to the electron for circular motion. That is, mvn square by Rn is equal to 1 by 4 by epsilon naught into Z square by Rn square, where Rn is radius of nth orbit and Vn is speed of electron in nth orbit. इससे आप कुछ नहीं ज़्यादा कर सकते हैं. आप चाहें तो मैं फिर इसको रिपीट करता हूँ. बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट पर घूमते हैं विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी. वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पुल है न्यूक्लियस का वही उसको प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स टू द इलेक्ट्रॉन फॉर सर्कुलर मोशन. Here this is electrostatic pull, and here this is centripetal force, where Vn is velocity, speed of electron in nth orbit, Rn is radius of orbit in nth orbit. Okay. Now Bohr's second assumption. Bohr's second assumption. Bohr's second assumption. This assumption is pure quantum. This assumption is pure quantum. Pure quantum. Here he says electron can revolve. Electron can revolve only in those orbits. Only in those orbits in which angular momentum of electron is integral multiple of h by 2. H by 2. An electron can revolve only in those orbits in which its angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. That is mvn Rn is equal to n h by r2 pi, where n is principal quantum number, it is equal to the number of orbit, principal quantum number, and h is a Planck's constant. Here this is pure quantum. That is, you can say also angular momentum of electron is quantized. Angular momentum of electron is quantized. And the angular momentum of electron is quantized.
दिस इज सेकेंड assumption ऑफ इजी है, आराम से याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमते हैं जिनमें उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हुआ करता है किसका, h बाई दिस इज एंगुलर मोमेंटम I omega, z equal to I omega. I is moment of inertia of the particle, mr square, and omega is e by r. So q b equal to omega into r. This is linear velocity, and this is angular velocity. R m v. Here this is angular. That is nothing else. You can remember easily. Okay. Bohr's third orbit, ये third dimension. Bohr's third dimension. Bohr's third dimension. जैसे अगर हम लोग किसी फैमिली की बात करते हैं, किसी पिता की 5 संतानें हैं, तो सबसे कम एनर्जी छोटी संतान की होती है, क्योंकि सबसे नजदीक वो संतान माता पिता के करीब है, और सबसे ज्यादा एनर्जी बड़ी संतान की होती है। और यही कारण है कि बड़ी संतान जो है वो परिवार से अलग हो जाता है, अपना अलग घर बना लेता है, क्योंकि उसके पास एनर्जी ज्यादा है। सिमिलरली first orbit of electron is the energy level of ground state. All other states are excited state. If an electron jumps from any higher energy state to the lower energy state, then difference of energies of these two states is radiated in the form of electromagnetic waves. Very well, repeat it. If an electron jumps from high energy orbit to low energy orbit, then difference of energies of these two orbits radiates in the form of electromagnetic waves. कोई भी इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जंप करता है, तो एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. दिस इज थर्ड पोस्टुलेट ऑफ when an electron jumps from any high energy state to the low energy state, then difference of these two energies
difference of these two energies is radiated in the form of electromagnetic waves. Suppose here this is high energy state of energy EI, and this is low energy state of energy EF. An electron jumps from high energy state to low energy state. Then difference of these two energies is EI minus EF, and this difference is radiated in the form of electromagnetic waves. That is EI minus EF equal to h nu, where h is Planck's constant, where h equal to 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second. ये Planck's constant है. And nu is a frequency. Nu is a frequency. This is third statement. फिर मैं रिपीट करता हूँ. इलेक्ट्रॉन जब किसी भी हाई एनर्जी स्टेट में से जंप करता है लो एनर्जी स्टेट में, तो जो डिफरेंस एनर्जीज का ये रेडिएट हो जाती जाया करती है किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फोटोन के रूप में. एक्चुअली फोटोन कह सकते हो E बराबर एच न्यू, E बराबर एच न्यू, जहाँ पर एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है, और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी. दिस इज थर्ड पोस्टुलेट, थर्ड assumption. तो इस तरह से हमारे पास 3 assumption हो गए. फर्स्ट, MVN square by R is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into ZE square by RN square. Here this is first postulate. MVN Rn is equal to N into H by 2 pi. Here this is second postulate. And third is I minus EF equal to H. ओके. अब एक बात ध्यान रखिएगा कि बोर्स एटॉमिक मॉडल is valid only for uni-electron system. Bohr's atomic model is valid only for uni-electron system. In electron system, it means one electron must be in outermost orbit. जैसे हीलियम से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लें, then helium plus. This is hydrolyte system. Lithium से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लें, तो here this is lithium plus more like ये इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम. ये क्वेश्चन आपको याद होगा नीट वालों ने किया था, और बड़ा इजी क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने, आपको याद होगा कौन सा क्वेश्चन है,
नीट यूजी का 2020 में था, जिसमें उन्होंने क्वेश्चन किया था कि फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड, जिसमें सिंगली आयनाइज्ड न्यून एटम, सिंगली आयनाइज्ड न्यून एटम ये संभव नहीं है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ओनली वन इलेक्ट्रॉन, only one electron should be. Like helium plus is hydrogen-like system, hydrogen-like atom. Lithium plus hydrogen-like system, hydrogen-like atom. That is Bohr atomic model is valid only for uni-electron system, जिसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उसी को हम यूज कर सकते हैं, उसी उन्हीं के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो 3 स्टेटमेंट इजी वे में आप आराम से याद कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप देखें तो फर्स्ट ये क्वेश्चन आपका मिला है 2020 मिला है कि कौन सा किस एटम पर हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं बोर मॉडल को, जिसमें उनका आंसर था सिंगली आयनाइज्ड न्यून एटम, ये नहीं कर सकता है। सिंगली आयनाइज्ड लिथियम एटम, सिंगली आयनाइज्ड, जिसमें केमिस्ट्री में सुबह से शाम पढ़ते रहते हैं कि आयनाइजेशन क्या है। हाँ, हीलियम से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालने में टॉप कर लें तो हीलियम एटम प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, हम इस पर बोर मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम? बोलिए। अब यहाँ पर आपसे एक और क्वेश्चन किया हुआ था, जिसमें उन्होंने रेडियस पूछी थी थर्ड ऑर्बिट की, थर्ड ऑर्बिट। ओके, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth orbit. Very easy. Easily reduced. Radius of nth orbit. Right. First two laws. Right here, first two laws. By Bohr's first assumption. By Bohr's first assumption, mvn square by rn is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into ze into ze square by rn square, or mvn square is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into ze square by rn. This is first equation. By Bohr's second assumption, by Bohr's second assumption, by Bohr's second assumption, mvn rn is equal to n h by r. This is second assumption. This is Vn, speed of electron in nth orbit. Eliminate Vn from these two equations. From these two equations. By putting the value of
by putting the value of Vn from equation second, in equation first, okay, by putting the value of Vn from equation second in equation first, put m Vn n h by r 2 pi m, that is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into z e square by r into r. One by 4 pi epsilon naught into z e square by r. Here Vn equal to n h by 2 pi mRn, 2 pi mRn, or m into n square, h square by 4 pi square m square rn square is equal to into rn is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into z e by r n. Okay, here's some mistake. Vn nh by 2 pi m rn. MP square. Let this is wrong. Okay, or m n square h square by 4 pi square m square rn equal to z e by 4 pi epsilon z e square 4 pi epsilon, or you can cancel m four pi or pi m rn by n square h square is equal to epsilon naught by z e square, or rn equal to n square epsilon naught h square by pi f, or Rn is equal
equal to R naught n square. Here Rn, then R naught. Here R naught equal to epsilon naught h square by pi. Here this is epsilon naught. Here this is Planck's constant. Here this is pi, and here this is mass of electron. Mass of. If we put all these values of all these parameters, we can find the value of R naught. Epsilon naught is 8.85 into 10 to the power minus 12. H 6.67 into 10 to the power minus 34. Pi 3.14. M 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. By putting the values of all these parameters, result is 0.53 angstrom. This is the radius of first orbit. Bohr's first. You can write here Rn equal to 0.53 n square. With the help of this, you can find a radius of any orbit. Radius of any orbit. If we put n1, then this is the radius of first orbit. If we put n equal to 2, then this is the radius of second orbit. If we put here n equal to 3, then this is the radius of third orbit. So you can find radius of any orbit with the help of this equation. इस इक्वेशन के द्वारा आप किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकाल सकते हैं. 0.53 n square angstrom per unit. एक बार इसको देख लीजिए. हमको नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम इसमें है. खत्म हो गया.